Hi everyone. Now we're beginning with new chapter, fourth chapter, that is planning. We've already discussed about planning when we discussed about the functions of management in the first chapter. Now I'd like to explain this chapter keeping the concept, features, importance, limitation, process and the types of plans in mind. If you remember, or if you don't, in that case, watch the first video, that is introduction of management. Then you'll realize that we've already talked about the functions of management, and the first function which a manager performs is a function of planning. What do we mean by planning? Planning is thinking in advance what is to be done in future. So you think at the back of your mind, you just make a course of action, you make a plan of action in your mind, and that plan of action has a futuristic approach. So when you bridge the gap between where you are today and where you want to be tomorrow, or where you want to go later on or in the future date, it is known as planning. When you answer what, where, when, how, why, you're talking about planning. When you're talking about a way to achieve results or the end results, you're talking about planning. So the means and ends to get to the objectives or to the results, the what, where, when, how, the futuristic process, the thinking in advance process, the bridging a back gap between where we are, where we want to be, is all about planning. Like I told you, this is the first function of manager. He plans first. Like for example, if you want to say achieve objectives, some kind of an objective, you want to increase sales by 20%. So what should be your first plan of action? First plan of action should be that how you're going to increase sales. So for increasing sales or for increasing profit for that matter, you have to work on the increasing of production. You have to work on the decreasing of cost of production. So when you strive to work towards these two things and you achieve your objective and you plan that in advance, and every day you keep on checking what is happening, how it is happening, when it is happening, why it is happening, where it is happening, you are actually planning. So in planning, the first thing we do is we set objectives. After setting the objectives, we create or we do some kind of homework or a groundwork or a base work. After doing that, you look in for alternatives. Now, what are alternatives? You make choices. You keep plan 1, plan A, plan B, plan C in mind, and you work on the positive and negative of all the plans. And then you decide which plan is going to work with you, because you've already taken up into consideration the positive and negative. Once you decide what plan you are choosing, because you had a choice of three plans, you had alternatives, and you decide and you choose one plan and you take that plan into action and you apply it, and if that plan gets completed, you see how it got completed and were there any shortcomings or not. This is what you're trying to do when you're planning. You sometimes be creative, you sometimes be innovative when you plan. Because planning is not an individualistic task. It has to be done on the long-term basis, short-term basis, day-to-day basis, and sometimes financial planning is also to be done. So you plan in totality for an organization. So if you have 4 departments, production, finance, HR, marketing and sales, all 4 have different goals. Like production, people would like to achieve the production target. Finance would talk about spending of cash or how to manage the cash. HR will talk about how to get trained personnel for work. Marketing and sales will talk about how to increase the sales or advertising expenditure, how that could be incurred, whatever it is. The objectives of all the 4 department would be different, and planning is one way that we try to put all these 4 together, get them together, get the work done from them, and then strive to achieve the total objective of the organization. So, when we talk about planning, I'll give you an example. Suppose you made a plan for going after plus 2 to a university, Delhi University, and you made no other plan and you decided that only Delhi University is the place you're going to go.
So you set yourself for Delhi University as an objective, you set it, and then you start working on it. Every day you study for 5 hours, giving 1 hour each to all the 5 subjects which you have. After studying in school for 8 hours, you do self study for 5 hours, so you study 13 hours a day, and for rest of the time for 1 hour you go and play with friends, or for 1 hour you just take a break, watch TV or whatever it is, and you schedule yourself accordingly. Now what you have done is, you have set an objective, you've done the base work, you've just decided the base work. Now you think over that if I have to go to Delhi University, I have to get 98% marks, but if I go to some other place, Narsi Munji, I have to give an entrance. If I go abroad, I can get through with 70% also. And you find 70% very luring, and you stop working according to that because you've chosen abroad as the alternative, but then you do not realize that for going abroad, you have to get a score in IELTS or some other kind of examination required there. Okay, again, that also you take into consideration. Then you select going abroad as your final objective, and then you start working on it. You see the positive, negative, you'll be self-dependent, and you would just not depend upon anybody else. You would work, and then you will study also, and that would be a better exposure. So you choose foreign as the thing, you forgo Delhi University. And you apply yourself every day that I'm going to study for 3 hours a day and finish my work and give my exam and get somewhere around 70 to 80% marks, get into a good university, and that's how the things are going to work. At the end of it, when actually your result comes, you get just 60% marks because you did not work enough, and you don't get admissions into any good university, and also your IELTS score is not enough to let you go to one of the countries abroad, foreign country abroad. Did you plan for something else? Delhi University was asking 98%. You planned for 70%. You got 60%. Your plan went haywire. Now what is to be done? You won't study? Or you'll study in some local school? Or you would do something else? Did you plan for it? Did you find the alternatives? Did you decide the right alternative? Did you work on it? If you fail to plan, you plan to fail. So that means what? If you are not planning properly, you are failing in totality. Planning is a stepping stone. Planning is the ladder to your success. So if you're climbing the ladder, if you are here and you want to climb here, this ladder will be only reached, you'll climb all the stairs once you are properly planned. This was an introduction. Now I'll come to the definition of planning. Start with the planning concept. Planning bridges gap between where we are and where we want to be. So here we are, where we want to be. Here we are, here we want to be. This is, I'm telling you why, because exactly this is what planning talks about. It is concerned with both ends and means. आपको रास्ता भी दिखाता है, रिजल्ट भी पहुंचाता है. Setting objectives and targets for a given time period. It is time framed. You can give your plus 2 once again and get 98% as a score and join Delhi University next year. You'll never do because there's a time frame there. Formulating a action plan. So what is action plan? I usually call it a course of action or plan of action. What do you plan to do to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among various course of action available. Get it very, very clear. If you do not have alternatives, if you have not made plan A, B and C, and if you have not done positive and negative, pros and cons, you have not evaluated, your planning is a failure. In totality, your planning is a failure. So you need to have what? You need to have a time frame. You need to have an action plan. You need to select the best alternative, all right, and whatever the course of action available are, and you have to work on them. Planning is deciding in advance what to do and how to do. हमने यहाँ पर करा where we are, यहाँ पे हमने कहा where we want to go, यहाँ हमने बात करी what, यहाँ हमने बात करी how, what, where, when, how, why. सारी चीजें हम कहाँ आंसर करते हैं? प्लानिंग में आंसर करते हैं. It is one of the basic managerial function. First function है. It is closely related with creativity and innovation. Plan A बनाया, नहीं वर्क किया. Plan B बनाया, नहीं वर्क किया. Plan C बनाया, नहीं वर्क किया. तीनों प्लान नहीं वर्क किए. कोई एक प्लान वर्क कर गया. जो भी बनाया, जो वर्क करेगा ना, वो हमेशा वो वाला प्लान होगा जो आपने क्रिएटिवली,
इनोवेटिव थिंकिंग के साथ कि सेम प्लान किसी और ने ना बनाया हो, वो बनाया होगा तो हमेशा वो प्लान वर्क करेगा, चाहे वो बी हो, चाहे सी हो, चाहे वो ए हो। इज परवेजिव, परवेजिव मतलब हर एक लेवल पे चाहिए, टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों लेवल पे। हमें चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के लिए, हमें चाहिए टैक्टिकल प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने के लिए, हमें चाहिए ऑपरेशनल प्लानिंग डे टू डे प्लान्स बनाने के लिए। और मैंने भी आपको बताया बिगनिंग में कि हमें कई बारी फाइनेंसेस को भी प्लान करना पड़ता है, बजट्स बनाने पड़ते हैं, सो बजटरी प्लानिंग इज ऑल्सो देयर। प्लानिंग टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, हर तरह के लेवल पे चाहिए प्लानिंग हमें, और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर की, कहीं भी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। नाउ बिजनेस फर्म्स व्हेन आई वांट टू टर्न व्हाट ड्रीम्स इनटू रियलिटी, जब वो अपने सपने पूरा करने जाते हैं ना तो प्लान करते हैं। प्लान कैसे करते हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, सो they what they do is immediately they try to turn their dream into reality, and the basic dream of any organization is to increase profit and increase sale। तो वो उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो और चाहे आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दो ताकि सेल्स ज़्यादा हो जाए, सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा हो जाए। So business firms when want to turn dreams into reality, they suppose they want to increase profit or sales by thinking in advance what to do and how to do। बस वो प्लान करते हैं, एडवांस में सोच लेते हैं what is to be done and how it is to be done। Continuing with the concept, planning requires taking decisions। If you have alternatives, you plan well, and you choose the best alternative, you've decided, so you should have alternatives, that means you should choose well and you should decide well। It involves making a choice from various alternatives। ये कहा जाता है प्लानिंग में से alternatives माइनस कर दो ना, प्लानिंग बेकार है, there is no planning। Of course yes, प्लान A B C सारों में से कोई एक तो वर्क करेगा, you need to have them, you can't work on one basis। ठीक है, ऑल प्लान्स रिक्वायर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। डेवलपिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक रास्ता चूज करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्शनलेस मूव कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट प्लान्ड यू आर मूविंग डायरेक्शनलेस, इफ यू आर मूविंग डायरेक्शनलेस दैट मीन्स यू आर नॉट प्लान्ड आइदर ऑफ द वेज। कैसे, आप एक जगह पे खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कहाँ पर है, और ना ही आपके पास कंपास है और ना ही आपने अपना होमवर्क किया है, आपके पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, you're lost, you're on the crossroad, you want to go to north, you might move to south, you just can't stand anywhere and think कि भाई मेरे हिसाब से नॉर्थ ये और मेरे हिसाब से ईस्ट ये, can't do like that। you need to plan in advance if you are going somewhere which is an unknown destination। so 12वीं के बाद आपने क्या करना है, अगर वो आपको अननोन डेस्टिनेशन है तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। So you have to take a course of action, achieve the objectives, and I just now told you, if you fail to plan, you plan to fail। Okay, that was all about concept of planning। Now I just would like to come to the process of planning। I'll just give you a briefing। मैंने जो इतना सारा कुछ बताया ना, ये सारा कुछ प्रोसेस पे बेस्ड था, और प्लानिंग की डेफिनेशन भी प्रोसेस पे बेस्ड है। सबसे पहले प्लानिंग क्या कहता है, आपको क्या सेट करना है, यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, क्लियर, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करोगे, 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करोगे, कॉस्ट कम करके या सेल्स बढ़ा के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस वर्क करना पड़ेगा। पिछले साल की सेल्स फोरकास्ट पढ़नी पड़ेगी, पिछले साल की सेल्स पढ़नी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए सेल्स फोरकास्ट बनानी पड़ेगी, इस साल कितनी सेल्स हुई, सारा कंपैरेटिव एनालिसिस, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो या तो आपके पास चॉइस है प्रोडक्शन बढ़ाने की, या आपके पास है चॉइस है कॉस्ट घटाने की। आप दोनों में से किस पे वर्क करना चाहते हैं, ये आप देखिए। आप दोनों को इवैल्यूएट करते हो। आपके लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब नई मशीन्स लेकर आना, ज़्यादा लेबर लेकर आना, ओहो प्रोडक्शन तो बढ़ गई लेकिन कॉस्ट भी साथ में बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ऐसे नहीं, हाँ हम कॉस्ट घटा सकते हैं, जो अननेसेसरी लेबर आई हुई है उसको हम हटा सकते हैं, और जो स्किल लेबर है उसको लेकर हम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन करके उसी के हिसाब से सेल्स कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करते हो एक ऑल्टरनेटिव, आप कॉस्ट घटाने की बात कर रहे हो, आपने सेल्स बढ़ाने की बात के लिए आपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात को छोड़ के आपने कॉस्ट घटाने की बात कर दी। आपने उसको अप्लाई किया, आपने चेक किया, अरे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कॉस्ट तो घटी नहीं, कॉस्ट तो उतनी की उतनी रहेगी क्योंकि सैलरी तो उतनी ही देनी पड़ी, थोड़े से ओवरहेड एक्सपेंसेस घटे थे, इससे अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा ली होती,
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ही तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता, फिक्स्ड कैपिटल का एक्सपेंडिचर बढ़ता, लेकिन उसकी तो रिकवरी सालों बाद होनी थी। तो अभी एकदम वेरिएबल कॉस्ट पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, तो बेटर था कि प्रोडक्शन बढ़ा लेते, बेटर था कि और इक्विपमेंट ले आते, क्या बेटर था आउटसोर्स कर देते। गलती पता लग गई, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, फिर से प्लान करते हैं, फिर से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव तक अचीव करने की या रीच करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट इज प्लानिंग अबाउट. I'll explain the process word by word to you just now. Okay, now we are doing the process of planning. I've already explained you process of planning with the definition. Partly it's been explained. Fully I'll explain it to you right now. I have made a short form out here. SPY, CAP, U. S for setting objectives. P as in developing premises. I as in identification alternative course of action. SPY, CAP. C, course. C, alternative A, implementation of plan P, and follow up U. So what do we have as a short form? SPY, CAP, U. S, setting objective. P, developing premises. SPY, I, identification of alternative course of action. SPY, CAP. Now what is C for? Evaluating alternative course of action. Then CAP, A as in selecting an alternative. P as in implementation of plan, and U as in follow up. Starting with setting objectives. What are objectives? Objectives are our endpoints. They should be specific, clear. Different departments have different objectives. Organization have to strive towards achieving objective, for which they have to make plans, be ready with the plans. If they're ready with the plans, it becomes easier to achieve objectives. First and foremost step of planning is setting of objectives. Objectives are for the entire organization. They specify what the organization want to achieve. They should be properly written, clearly stated. They give direction, because without objective, people would be moving in different direction. They would be directionless. Objective should relate to each unit and employees for everyone. If you have 4 department, production, finance, HR, marketing and sales. I just gave you the example. So if you have 4 departments and all different employees are working there, all objectives will be different, but they have to work for the entire objective of the organization. If end result is clear, it becomes easier to work towards the objective. If you know what you're striving for, if you're planned for, then it's easier to achieve the objective. Next is developing premises. What do we mean by premises? Premises are our assumption. Assumption means what? You just plan that what you want to do, what is your objective, and you develop a base for it. You do a groundwork, you do a homework. Once your base or groundwork or homework is done, you have to get some facts and figures. So what you do is you keep the past, present in mind. So you keep the past in mind, past facts and figure, present facts and figure, and then you make the future or the forecast. Suppose sales. Last year you had sales of 10%. This year you were planning 20%, or you got the sales of 20%. What should be next year? So it should be 25, or it should be 5, or it should be 15. Of course, more than what you had this year. So that's how you develop your premises, keeping the policies in mind. Planning is concerned with future, and future is uncertain. We had 10% sales last year. This year we were planning 20%. Lockdown has brought us down to we do not know what. The year is still, we have to go with the year ahead, So this is not the end of we still have very certain, we are sure with our planning by the end of the year, we'll be able to achieve 20% profit. Many of the organization can say that. Alright. So the manager is required to make certain assumption about the future. Some assumptions are made. Assumptions are called premises. Assumptions are required as a base. Like I told you, homework, groundwork. They are like for past, present or future. Premise must be same for all, of course, for the complete organization. So successful plans are based on accurate forecast. If your forecast comes out to be exact the way you thought about it, and you, like whatever your forecast was, and your plans are according to that, or your objectives are according to that, your premises become successful, your planning becomes successful. Next, identifying alternative course of action. So once you've set the objective, you've developed the premises, next step would be to act. So you have to take the alternatives, you have to identify them, you have to see the rasta, the course of action. इट कैन बी रूटीन और इनोवेटिव. अब तुम्हारे पास 2 ऑल्टरनेटिव है. तुम भाई प्रॉफिट कमाना चाहते हो. प्रॉफिट कमाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सेल्स बढ़ा सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. So if you increase the sales of the product, existing product,
आप उसकी फीचर्स बेटर करके कर सकते हो। मैगी ने ऐसा किया था, आज से 15 साल पहले मैगी ने क्या किया, उसी प्रोडक्ट के साथ उसका मसाला चेंज कर दिया, मैगी की जो थिकनेस थी वो चेंज कर दी, जो नूडल्स की थिकनेस थी उसको चेंज कर दिया, उसकी पैकिंग चेंज कर दी, रादर पैकेजिंग चेंज कर दी, उसका रैपर चेंज कर दिया. They launched themselves, relaunched themselves. Why? Because they had competition with top ramen noodles. So they started competing like that. उन्होंने अपनी sales ऐसे change करी. It depends on you how you want to change your, what kind of alternative are you trying to strive at. So it can be it can be routine, it can be innovative. Like for example, to increase sales of existing product, you can make either you can increase sales by adding on the new features, or you can make a complete new product. But for making a new product, you have to launch that product in the market. You have to start from the scratch. That may involve a lot of money. So it's your decision which alternative is best for you. All right. Evaluating alternative course of action. Now what you do is, suppose you plan to make a new product. Suppose. So इसके pros and cons क्या होंगे? नया प्रोडक्ट बनाना है, नए प्रोडक्ट के साथ पंगा क्या आएगा? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, मैन पावर लग जाएगी, सारा कुछ मार्केट में जाकर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि जो अभी का प्रोडक्ट है उसमें कोई थोड़े से चेंजेस करके नए फीचर्स ऐड कर दो. तो आपने इवैल्यूएशन करी, इवैल्यूएशन के हिसाब से आपने कुछ और ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया फाइनली. Here pros and cons, positives and negatives of each alternative is weighed. Each course of action will have many variables, बहुत सारे चीज़ें होंगी. Positive and negative aspects of each are evaluated. Alternatives are evaluated keeping feasibility. Feasibility मतलब कि वो कितना सही है, okayness and consequences. Consequences मतलब result. तो आप देखते हैं कि whether that particular alternative is suitable to you, is it okay for you, and what would be the outcome or result. So okayness and consequences मतलब रिजल्ट क्या रहेगा, आप इवेलुएट करते हैं अपने ऑल्टरनेटिव को. अब आपने इवेलुएट कर लिया, आपने सोचा कि हम इंक्रीज करेंगे सेल्स जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बाय एडिंग ऑन फीचर, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया ऑल्टरनेटिव को. दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. फाइनली डिसाइडेड, बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. सो आइडियल प्लान कौन सा होता है? जो सबसे फीजिबल, सबसे ओके होता है, प्रॉफिटेबल, जो आपको फायदा देगा, विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी. तो अगर हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग अ न्यू फीचर, इसका मतलब क्या है कि ये कैसे आइडियल रहेगा, फिजिबल कैसा रहेगा? मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबल रहेगा. हाँ, हम एड ऑन फीचर ला रहे हैं, जो हमारे कंपेटिटर ने लाया उससे बेटर कोई नया फीचर ला रहे हैं, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो है ही नहीं क्योंकि हम तो उसको प्रोडक्ट को बेटर कर रहे हैं. सो सिलेक्शन चॉइस वॉज परफेक्ट. नेक्स्ट, सो मैनेजर्स किस चीज़ पे बेस करते हैं इस चीज़ को? अपने एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट, अपनी इंट्यूशन पे ये काम करते हैं. समटाइम्स हम मैनेजर्स क्या करते हैं, दे मेक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलग अलग चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड ऑन द पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. अब आ गया टाइम, चीज़ को क्या कर दो, एक्शन में ले आओ. दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. This is doing what is required. Here other managerial functions come into action. तो planning में organizing, staffing, directing, controlling सारा कुछ साथ में आ रहा है. Here managers communicate, plans बताते हैं, resources देते हैं अपने लोगों को. और वो कैसे होता है कि अब सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको या तो ज़्यादा बड़ी मशीनरी लानी पड़ेगी और मशीनरी लानी पड़ेगी, ज़्यादा लेबर लानी पड़ेगी. तो आप क्या करते हो, सपोर्टिव प्लान्स बनाना शुरू कर देते हो. आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, तो आप सपोर्टिव प्लान्स बनाना शुरू कर देते हो. इन प्लान्स को क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव प्लान्स कहा जाता है सपोर्टिव प्लान्स को. सो हियर डेरिवेटिव प्लान्स आर हाईलाइटेड, वर्क इज डन अकॉर्डिंगली, एंड देन यू डू नथिंग एल्स बट फॉलो अप. आप चेक करते हो कि ये ऑल्टरनेटिव ठीक रहा या नहीं. अगर नहीं रहा तो अगली बार इसको नहीं लेंगे, अगर रहा है तो अगली बार फिर से ले लेंगे. सो टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और एक्टिविटीज आर परफॉर्म एज स्केड्यूल्ड, जैसा सोचा था. हमें मॉनिटरिंग और चेकिंग चाहिए होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं. एक क्विक रिकैप ऑफ द हेडिंग्स. S, setting objective, developing premises, identifying alternative course of action. This is evaluating a course of action, then selecting selecting the alternative. P is implementation of plan, and U as in follow up. That finishes off the process of planning. We'll take up features, importance, and limitation in the next video.